Hi guys, welcome back to yet another video podcast episode of the El Clasico Football Hub. Today's episode is a bit special because we are going to talk about the UCL, a competition in which we are all very excited every year, a competition in which we are very successful in. And today we are going to discuss some key fixtures that we have in the match day week, the first one. We're going to start with Barcelona and Madrid's matches, and then we are also going to cover some key matches that are also going to be there this week. So let's start with Barcelona's match first, away to Newcastle at St. James's Park. Difficult fixture. Aditya, what are your views? So I think Barcelona away at St. James Park is going to be the one of the trickiest tie that Barcelona is going to face in general this season. So teams usually St. James Park में जाके enjoy नहीं करती है. It's not an easy stadium, right? PSG in the past have lost there. It's not easy to match the physicality that stadium with those players offer, right? So Newcastle versus Barcelona, I will first start with why Barca could do it. So Newcastle का recent form has not been good. So lately, last तीन Premier League के matches में Newcastle has not won a single one of them. I know last match उनका Leeds United के साथ था, वो draw हो गया था. Liverpool के साथ they lost, which was their important test out there, right? और उससे पहले वाला भी जो उनका रिजल्ट था एस्टन विला के साथ, वो भी उन्होंने शायद ड्रॉ किया था 0-0. However, the good thing was for Newcastle, which was something that they will carry forward, was कि लिवरपूल के साथ उन्होंने 2-3 स्कोर निकाला था from against a good side, against one of the top sides in Europe. At So Anfield. I at Anfield, correct. So they can do it. They have all the right mix to kind of have the results and on their day get all the 3 points out of this match, right? Get a win from this match. For me, the key battle is going to be a midfield battle in this match to start with. उनका एक बहुत बहुत एक अंडररेटेड प्लेयर है ग्यूमेरिया करके, राइट? Yes. और ही इज वेरी फिजिकल, ही इज वेरी टेक्निकल, राइट? सो ही इज अ बॉल विनर काइंड ऑफ अ प्लेयर. वो प्रोग्रेशंस को ब्रेक कर देता है. वो बॉल वापस ऑपोजिशन हाफ में वो बॉल विन करता है और वापस तुरंत ट्रांजिशन करता है ऑपोजिशन हाफ में. सो इज वेरी टेक्निकल एंड वेरी फिजिकल. सो द ये जो पेड्री फैक्टर आएगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस पेड्री के अगेंस्ट जाके वो अगर बॉल विन करना शुरू कर देगा, राइट, एंड पेड्री को इनएफिशिएंट अगर बना दिया, तो द होल ऑफ बार्सा's इंजन इज गोइंग टू काइंड ऑफ गेट स्टॉप्ड और गेट इन शैम्बल, स्पेशली अगर डियोंग वापस नहीं आता है तो. विद डियोंग यू हैव अ टेक्निकल प्लेयर आउट देयर मिडफील्ड में हु कैन काउंटर दैट. But if not, then it's going to be a challenge for Barca, especially because I'm coming to the second part of their midfield, which is Sandro Tonali, from what I know. Tonali, हाँ. So Tonali is a great CDM that they have got. उसका profile for Barca fans, they can consider his profile to be थोड़ा सा Rakitic type, that he's very like a workhorse kind of a person, जो pitch up down करेगा. वैसे उसका profile CDM होता है, but he runs all along the pitch, right? So जो टोनाली का प्रोफाइल है, with that kind of profile as your CDM, I guess न्यूकासल के पास एक strong technical midfield है. And while Barca also has that, but मैं ये नहीं कहूँगा कि बारसा के पास complete edge होगा, given the way Premier League teams play a physical match, and they have Newcastle especially have these good midfield players. So that's my take specifically on how the matchups are going to be in midfield. What are your views here? आई थिंक इंटरेस्टिंग मिडफील्ड बैटल तो होगी. आई थिंक टोनाली ग्यूमेरेस दोनों अच्छे प्लेयर हैं. टोनाली के अंदर नॉट जस्ट इंटेंसिटी, उसके अंदर थोड़ा वो वाली गेम, उसकी गेम में वो भी है कि थोड़ा लॉन्ग बॉल्स भी शिफ्ट कर लेता है वो प्लेस. जैसे लॉन्ग बॉल्स के साथ कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, तो वो चीज भी उसकी गेम में है. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, स्पेशली अगेंस्ट बार्सिलोना, जिनके लिए विंग्स थोड़े वल्नरेबल हैं, especially with the offside trap, है ना. तो इस गेम में आई एम एक्सपेक्टिंग न्यूकासल टू बी फिजिकल and to constantly shift the ball from left to right and try to penetrate through the wings. ये मुझे लगता है ओवरऑल प्लान होगा न्यूकासल का.
न्यूकासल Correct. का अगर जनरल गेम प्ले भी देखें, दे प्ले विद अ 5 बैक सिस्टम, तो वो विंग्स Hmm. के थ्रू ही जनरली अटैक करने वाले हैं। बट आई हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है दिस इज नॉट द न्यूकासल दैट बीट पीएसजी 4-1 लास्ट ईयर। ये Hmm. थोड़ा न्यूकासल थोड़ा चेंज्ड है। इन अ वे यू हैव टेकन आउट देयर बेस्ट प्लेयर, एंड Correct. नॉट जस्ट देयर बेस्ट प्लेयर ऑफ प्रोबेबली द लास्ट डेकेड, राइट? तो Yeah. One of इसाक the के finest, जाने से one आई of the थिंक best players of the world right now. राइट, राइट। सो आई थिंक इसाक के जाने से एक होल है जो अभी न्यूकासल के अंदर है, एंड दैट इज एविडेंट, जैसे तूने मेंशन किया इन द लास्ट फ्यू मैचेस एज वेल। तो वो थोड़ा Correct. एविडेंस दिख भी रहा था उसका। But I still feel, because of the aura of the stadium, St. James's Park, because of the atmosphere, I think थोड़ा बहुत ऐसे electric atmosphere भी रहने वाला है. That is the only challenge that I can see for Barcelona. Otherwise, I feel Barcelona is going to control the tempo. Pedri, the center backs. I think इस match में शायद लेवा भी खेलेगा. तो Correct. high probability कि they are also going to convert those chances जो पहले मिस हो रहे थे. अभी तक जो बार्सिलोना के मैच हुए हैं हैव ऑल बीन अवे मैचेस। सो अगर ये कहा जाए कि एक मैच ड्रॉ हुआ है, दिस इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन, क्योंकि सारे अवे मैचेस थे, सारे थोड़े थोड़े टफ मैचेस थे। बट आई फील दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टेस्ट फॉर बार्सिलोना, स्पेशली अगेंस्ट अ गुड टीम एंड अ गुड क्राउड। तो आई थिंक उस सेंस में बार्सिलोना के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट बार्सिलोना टू कम थ्रू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है कि बाल्डे इज नॉट गोइंग टू प्ले इन दिस मैच, क्योंकि बाल्डे इंजर्ड हो गया। सो वहां पे इफ बाल्डे इज नॉट देयर, देन जेरार्ड मार्टिन विल बी देयर, राइट? जेरार्ड मार्टिन अगेंस्ट, आई थिंक उनका एक प्लेयर है एल्गाना करके, राइट? When he will drift inside, right, with his pace, and those balls coming in, और जब वो drift करेगा inside, I think Rafinha or whoever plays on the left, I hope it is Rafinha, it will be a very important duty to support that left wing, sorry, left back side and right wing side of Newcastle. Else that wing is going to provide a lot of problem, क्योंकि उनके पास टेपियर भी है वहां पर, फिर एल्गाना will play on that side, right? So I think वो वाला flank is generally going to create some problem, and बारसा के general जो good successful attacks आएंगे, that will come from Lamin's side, not only because of the talent of Lamin, but also because that side feels comparatively more astute, comparatively more grounded and solid for Newcastle, according to me. हाँ, आई थिंक फेयर पॉइंट। बट आई थिंक एक एक और अच्छी चीज़ जो है, इस मतलब मैं तो बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ कि बार्सिलोना इज़ ट्रैवलिंग टू मीट एन इंग्लिश साइड। मैं बहुत कम देखता हूँ कि बार्सिलोना और कोई प्रीमियर लीग के क्लब का कोई मैच हो रहा था। आई थिंक उस सेंस में इट्स आल्सो इंटरेस्टिंग। हमारे तो होते Yeah, रहते हैं, हमारे तो हर सीज़न सिटी मिल जाता है, लिवरपूल मिल जाता है, Liverpool, Manchester चेल्सी मिल City, जाता है। तुम्हारा test, which is again a good test for Barcelona. So let's see the हुँ, physicality that Premier League's bring, right? Which also brings in the fact that Rashford बहुत important हो सकता है, coming on from bench, हुँ, knowing this atmosphere, knowing how to control that. Plus Rashford left wing खेलेगा, which is Trippier, और हुँ, Trippier tired हो चुका होगा तब. So अगर I think हुँ, Rashford could have a very important role to play in this match, coming off bench because of the experience, physicality, and the fact that एक उस टाइम एक टायर्ड न्यूकासल के अगेंस्ट परफॉर्म कर सकता है एंड प्रोवाइड दैट हुँ। edge जिसके लिए we have bought in Rashford, right? So important game for Rashford as well. सो Aditya, व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू बी द स्कोर लाइन? According to me, scoreline is going to be 2-2. So giving 2 goals to Barcelona because Newcastle will give you the chance to score, but also respecting Newcastle on St. James Park, I think Newcastle is also going to score 2 goals or given Barcelona a leaky defense. Plus Lewandowski का first Champions League match and maybe second match this season for Barca coming on the pitch अगर वो लेन सकेंगे खेला तो. So net I think 2-2. which I, which आई which थिंक according आई to me positive result for me right now. आई थिंक ये तुम्हारा सबसे टफ टफ मैच होगा कंसिडरिंग ऑल द फिक्सचर्स। पीएसजी वाले Correct, में डेम्बेले एंड ड्यूरे आर नॉट देयर, correct, तो आई थिंक मे बी राइट अप देयर विद पीएसजी, बट दिस इज वन ऑफ द correct. टफेस्ट मैचेस, है ना? Agree, agree. आई थिंक आई विल गो विद अ 3-1 बार्सिलोना विन। आई थिंक इसाक की कमी काफी फील होने वाली है उनको, स्पेशली इन अटैक, एंड बार्सिलोना आई थिंक आर गोइंग टू डोमिनेट द मैच, एंड 3-1 इज माय प्रेडिक्शन। Which brings us now to the second match that we are going to discuss.
and this is Real Madrid versus Marseille. So, Anand, what do you think, or how do you think Real Madrid is going to approach this match? Because on paper, it looks like comparatively easier of the fixtures of Real Madrid, right? From that point of view, or also, I think there are going to be some misses from the team as well. Abhi pata chala, Rudiger is out as well. Bellingham, anyways, has been out for a good part of the season. So, what do you think will be Zabi's approach for this match? I think overall, I would say if Madrid takes this match seriously, they're going to win. बट लाइक यू मेंशन थोड़े इंजरीज भी हैं रूडिगर का हमें रिसेंटली पता लगा बेलिंगम आई थिंक इज आउट टिल अक्टूबर कामाविंगा भी इस महीने तो नहीं खेल रहा तो मेरा सिर्फ होप इस मैच से ये है कि वी टेक दिस मैच सीरियसली क्योंकि हमेशा मैड्रिड के यूसीएल स्टार्ट में देखा गया है कि स्टार्ट को हम सीरियसली लेते नहीं पहले सोते रहते हैं उसके बाद फिर हमें प्ले ऑफ खेलना पड़ता है सिटी के अगेंस्ट उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है तो आई थिंक इस सीजन भी वो चीज ना हो कि मे बी आई थिंक मड्रिड इज यूज्ड टू प्लेइंग इन ग्रुप स्टेज मैचेस उसके अंदर ऐसा होता है कि पहले तुम कुछ मैचेस लीनियंटली खेल लो आराम से खेल लो मर्जी से जीत लो पर आई थिंक लीग फेज के अंदर द पोजीशन दैट यू आर इन डिफाइंस योर होल सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड ना तो आई थिंक Correct. उस सेंस में थोड़ा सा मड्रिड नीड्स टू बकअप इसको लाइटली लेने का नहीं सोचना चाहिए उनको बट बिफोर आई टॉक अबाउट मड्रिड इवन फर्दर आई लाइक टू टॉक अबाउट मार्से मार्से हैड अ शेकी स्टार्ट टू द सीजन बट रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड पिकिंग अप देयर पेस आई थिंक आज ही उनका एक मैच था विच दे वॉन 4-0 वर्सेस लॉरियंट Correct. एंड उसके अंदर वी सॉ ग्रीनवुड आल्सो स्कोरिंग पवार्ड आल्सो प्लेइंग वेल currently I think they're fourth in league 1 so they're not a side to be taken lightly आई थिंक कि थोड़ा सा ट्रिकी मैच हो सकता है हैविंग सेड दैट आई डू एक्सपेक्ट मैड्रिड टू विन बट मैड्रिड के अभी तक जो भी दो होम गेम्स हुई हैं दोनों क्लोज विंस हुई हैं 2-1 आई थिंक और 1-0 ये मैच भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ वे में मैं पैन आउट होते हुए देख रहा हूँ इन द सेंस कि आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी विन होगा लो लो नंबर ऑफ गोल्स रहेंगे क्योंकि मैड्रिड इज स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द न्यू सिस्टम अंडर चावी अलोंसो आई थिंक थोड़ा सा बस ये है कि लाइटली ना लें ओपोनेंट को एंड वी टेक इट इन द वे दैट यूसीएल मैचेस शुड बी टेकन द ओनली क्वेश्चन पॉइंट फॉर मी is Xabi Alonso going to go with experience with the likes of Rodrigo, with the likes of say Chumeni, Valverde, or he's going to go with say Arda, say Franco, with the new young blood जो अभी तक वो पैटर्न रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट वाला पैटर्न अभी भी रहेगा या फिर इज गोइंग टू गो विद एक्सपीरियंस आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन मार्क I think, yeah, I agree ki Marseille wala point. You can't take Marseille lightly. One, because if a team is playing in Champions League, उन्होंने prove कर दिया है कि they can upset any big team on their day, right? So one, Marseille को you cannot take lightly. And second, also because they have players like Greenwood, they have players like Pavard, right? The two names who are going to, dictate where all the cameras are going to look for Marseille, right? And मुझे लगता है seeing the matches of Madrid इस season अभी तक, it's not that Madrid ने opposition को goal scoring opportunities दी नहीं, they had those goals to offer. It's just that Madrid का अभी वो ऐसा मैच हुआ ही नहीं है जिसमें बहुत इजीली कोई स्ट्रॉन्ग टीम आके वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए, राइट? सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, while it is Champions League, easier of the fixture of Madrid, but if Madrid is caught sleeping at any point of time, Marseille has all the flavors to come out and score those goals and give Madrid a trouble. आई थिंक आज भी एक मैच है अगेंस्ट रियल सोसिएदाद which is going to be a good challenge for Madrid. I think उसमें Correct. भी we are going to see a team who can actually convert those chances that are created. So I think Correct. A good flavor before the UCL match starts for Madrid as well. So having discussed all this, what do you think will be the scoreline? I think थोड़ा सा केजी हो सकता है मैच बट आई थिंक a 2-0 or maybe a 2-1 victory to Madrid is what I'm hoping. I would say 3-1. What you predicted for Barca Newcastle, I would rather predict for Madrid Marseille. So according to me, it's a 3-1 victory for Madrid. It won't be easy. वो goals आएंगे, threat होगा,
but I think eventually Madrid will come out on top and a comfortable 3-1. Okay, so let's do this. What if इस match day में Champions League के you have to watch just one match and it cannot be a Madrid or a Barca match. So कौन सा match देखोगे? Mm, I think for me it would be Liverpool against Atletico Madrid at the Anfield. I Mhm. remember last time around जब Anfield गई थी Atletico Madrid, वो famous upset हुआ था जिसके अंदर they knocked out Liverpool out of the Champions League. वो 3-4 साल हो गए शायद उसको. But I think it's going to be revenge time for Liverpool this time around. Liverpool has had a generational ट्रांसफर विंडो. कितने सारे प्लेयर्स उन्होंने अच्छे-अच्छे प्लेयर्स खरीदे हैं. इसाक हो गया, विर्ट्स हो गया, केर्केस, फ्रिम्पोंग, है ना? तो इतने सारे प्लेयर्स on top of the existing squad that they had. So I think Liverpool is very strong this season, not just in Premier League, also in UCL. Atletico, on the other hand, have had a very Bad bad start. start. Very bad start. They're I think Very bad 17th start. or 18th in the league. अभी तक कोई मैच जीते नहीं है वो. एंड उनका जो अगर मैं ट्रांसफर विंडो कंपेयर करूं, उनकी ट्रांसफर विंडो का जो बेस्ट ट्रांसफर था बायना, वो इंजर्ड पड़ा है अभी. So I think it's Correct. going to be revenge time for Liverpool this time around. I am expecting a big thrashing. I think Liverpool are going to go and beat Atletico Madrid at least 3-0 or 4-0 is what I'm thinking. At the same time, I want to see कि can Atletico bring that grit wala thing back on the table, right? So Atletico European elite defense hota raha hai historically, not Hmm. because that they always had a best defense, but because they always had that best defensive mentality. और उन्हें पता है Hmm. कि लिवरपूल को वो आउटस्कोर तो नहीं कर सकते, राइट? Hmm. सो हाउएवर व्हाट दे कैन डू इज दे कैन मे बी होल्ड देम ऑफ. सो आई थिंक एटलेटिको का वही गेम प्लान रहने वाला है. सो आई वांट टू सी how much time can they hold that elite Liverpool attack with Mo Salah, Isak out there. It will be a cracker of a game against, I mean, unstoppable force versus immovable object. So let's see. But I would think this season Atletico Madrid is not the immovable object that it used to be. Hmm. I think Club World Cup में भी I think PSG के साथ opening match था उसके अंदर भी पूरा thrashing हुआ था. अभी La Correct. Liga teams भी are now beating and maybe drawing against Liverpool, against Atletico Madrid. Atletico. तो I think थोड़ा tough तो होने वाला है. But let's see उनकी grit अगर वो दोबारा वापस ला पाते हैं and they can get a result out of it तो देखते हैं Huge उसको. result. Huge Hmm. result. अगर draw Yes. भी हो गया तो it's a huge result. So, same question for you, Aditya. If there was one match that you really want to see apart from Madrid and Barcelona's matches, what's that one match? Uh, According to me, that one match would be Bayern versus Chelsea. I'm drawn to Mansi versus Napoli as well, but according to me, for me, that match would be finally Bayern versus Chelsea. And the reason for that is twofold. One, because Barca और Bayern दोनों एक टाइम पे मेरी फेवरेट टीम हुआ करती थी. Eventually, I went Barca's way. So one Bayern से है थोड़ा, but now as a Barca fan, I hate them. Not hate them, but yeah, I have a revenge mode for them. But having said that, that match is going to be one heck of a match. One, it is at Allianz Arena, right? Bayern ka home. Bayern have started the season really well, right? Things are looking good for company's side. अब मेरे को स्लोली कंपनीज के आइडियाज इंप्लीमेंट होते हुए दिख रहे हैं, राइट? सो हाउएवर द प्रॉब्लम फॉर देम एट द सेम टाइम इज वो होम एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करता है एब्सेंस ऑफ class apart players like Musiala or Alfonso Davies. So no team in the world is not going to miss them, right? So those are some problems that Bayern have to kind of get rid of. And it's not just another Bundesliga team, it is Chelsea, right? And Chelsea is a resurgent Chelsea, I would say, who have gradually improved under Maresca, right? So Hmm. they started off the season last season slowly and steadily, और फिर वो build up करते 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 they have again became an elite European side. And they Hmm. proved it जब उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप फाइनल PSG के साथ खेला, right? Right. They were not just another team जिसको उन्होंने हराया, in not just another competition, in not just another stage. That was Champions League winning side PSG against in a Club World Cup final,
right? So Chelsea historically has this tendency of upsetting Right. informed teams. Be it PSG, Hmm. अभी उन्होंने बायर्न हरा दिया था, राइट? 2020 21 या 20 में चैंपियंस लीग में बारसा को उन्होंने अपने प्राइम पे हराया है. So this Chelsea generally has this flavor of, upsetting big teams. So it's going to be one heck of a match according to me. Hmm. And what do you think is going to be the score line? Score line इसका बहुत tough है predict करना. But if I have to, I'll give it 3-2 to Bayern or To 2-1 Bayern. to Bayern. Yeah, 2-1 or 3-2 to Bayern, depending on how both the teams approach the match. But eventually, I think Bayern is going to come on top. I think I agree. I think Chelsea has always been that team जो big teams के against अच्छा perform करती है, not just the PSG वाला game. Also historically as well, Champions League final में they beat Man City. जब everyone was expecting कि Man City जीतेगी, उसके बाद भी I think बहुत सारे ऐसे crucial fixtures रहे हैं जिसके अंदर Chelsea when you think that they're out, तब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आता है उनका. ऑल्सो अंडर अ गुड टैक्टिकल कोच, under a new system in which they have a solid midfield as well. Enzo is the orchestrator, right? And you have Caicedo as well. अभी Pedro, I think they have a player called Pedro as well. So वो भी अच्छा बहुत अच्छा खेल रहा है अभी. बस I think the only question mark is Cole Palmer की fitness. अगर वो फिट होता है और वो मैच खेलता है, आई थिंक चेल्सी हैव अ रियली गुड चांस टू इवन बीट बायर्न एट देयर होम if not draw. But I think I'll go for a 2-2 draw. Close enough. I think I'm giving Bayern advantage, but I would I would not be surprised if it is a 2-2 draw. I could very well go towards a 2-2 draw. Hope you enjoyed our conversation on match day 1 of the UCL. Football is truly back, an interesting game week ahead. Like the video if you haven't already, और ऐसे similar discussion सुनने के लिए subscribe the channel. See you in the next one.